motion, first thing we need to understand is scalar quantities and vector quantities. Okay, what is the meaning of scalar and what is the meaning of vector? Scalar means what? There's only magnitude and no direction. Correct. And vector means what? Magnitude plus direction. Yes, so scalar has only magnitude, correct? And vector has magnitude plus direction, right? Right. Now, for us in motion wala chapter, there are few quantities which are important. One is distance, correct? One is speed, one is time, right? All these are scalar quantities because distance doesn't have a direction. Speed is a scalar quantity. Getting it? Speed is not the vector quantity. Velocity is the vector quantity. And third one is the time. And on the basis of these three, we have learned to draw this kind of triangle. Yes or no? Distance, speed, and time. Am I right, guys? सबको Yes. याद है क्या ये? Yes. Okay. And on the basis of vector, like vector quantities are like displacement. First quantity is displacement. Displacement means what? What is the meaning of displacement? Can anyone explain Distance me or what is the meaning direction. of- The shortest distance. Yes, the shortest distance between 2 points. Yeah, shortest path traveled between 2 points. Am I right? Right. So now see, displacement को हम small s से represent करते हैं. किससे represent करते हैं? Small s. And displacement का unit होता है meters और centimeters और millimeters, like single unit of meters. Yes or no? Length का single unit. Either it can be meters, centimeters, millimeters or kilometers. Getting it or not? Right? Now, Got it. in coordinate geometry, x axis, y axis, right? In coordinate geometry, what we have learned कि अगर मैं right side में जा रहा हूँ, then my direction, my values will be positive, right? If I move into negative direction, my values will be negative. If I move in upward direction, my values will be positive. If I move in downward direction, my values will be negative. So अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देके रखा है, if I'm saying that displacement is negative 5, so what it means, the displacement or the position is moved in the opposite direction. Like if I'm taking right side as the positive and if I'm saying the displacement is negative 5, it means I have moved towards the left side. Getting it or not? Yes or no? Yes, sir. Yes. Understood? Okay. Now see. डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमको एक और टर्म मिलता है, दैट इज वेलोसिटी. व्हाट इज दैट? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एम आई राइट? वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एंड वेलोसिटी को हम अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में बताऊं, इफ आई एम डिस्कसिंग वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ओके, displacement over time. If displacement over time is like this, okay, so what can I say about the velocity? Can anyone explain me what I have drawn on the graph? This is displacement versus time graph. What does this straight line signifies, or what is it indicating? Constant velocity. So uniform velocity. Yes, it is representing constant velocity. Yes or no? Yes. Okay, ठीक है. Now see, there are three types of velocities. Like first one is constant velocity. Okay, what is the meaning of constant velocity? Your velocity is not changing at all. If you are traveling at the speed at the rate of 20 meters per second, it is a constant velocity. Yes or no? Yes or no? Yeah. Yes. Guys, Arya, Shanu, Ishan,
Yes, sir. Understood. Yeah. समझ See, what is uniform velocity? What is the meaning of uniform velocity? Samaira. Like constant speed over equal intervals of time. So constant acceleration of an object. Okay, ठीक है. अच्छा, see, when my velocity increasing at a constant rate, what do I mean by constant rate? Let us assume मैं पहले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था for first 5 seconds. For next 5 seconds my speed increased to 20 meter per second. For next 5 seconds my speed increased to 30 meter per second. For next 5 seconds my speed increased to 40 meter per second. So now if you observe here, यहां से यहां 10 का चेंज था in 5 seconds, यहां से यहां 10 का चेंज था in 5 seconds, यहां से यहां 10 का चेंज था in 5 seconds. Yes or no? When my speed Yes, is sir. increasing at a constant rate, it is considered as the uniform velocity. Getting it or not? Yes. Sir, but rate of change of velocity is acceleration. तो वो इसके बाद का टर्म है ना. If you अभी understand इधर what वेलोसिटी is- चेंज होते जा रही तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ. हाँ, तो acceleration आएगा ना इसके बाद. तो पहले velocity को तो समझो. हाँ If, सर. if your object is moving at a uniform velocity, you will have a constant acceleration. Getting it or not? Guys, Shanu, Samaira, Hira. Like Yes, if yes. velocity is increasing at a Yes. at like equal intervals of time. Yes, correct. Okay. Now, non-uniform velocity means what? Your velocity will not be uniformly increasing. मतलब पहले 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर उसके बाद 70 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. So when that rate is not constant, it will be considered as non-uniform velocity. Getting it or not? Yes. Yes, sir. Okay. Now see, after velocity there is a term acceleration. What is that? Accelerate. Acceleration. What is the meaning of acceleration? Acceleration is nothing but change in velocity upon change in time. Correct? Am I right, guys? Yes. Change in velocity upon change in time. Right? So if I am moving with a constant velocity, what did I say? Constant velocity. If I am moving with constant velocity, what will be my acceleration? Sir, question repeat. Oh, zero. Yes, when I'm moving with a constant velocity, my acceleration will be zero. Why? Because change for constant is always zero. Yes or no? Yes. मैं constantly 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ for first second, third second, seventh, 100, every second. My difference of any two times will be zero. That's why my acceleration will also be zero. Getting it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. ठीक है. Now acceleration में दो terms होते हैं. Now what are those two terms? One is positive acceleration, or you can say simply a acceleration. Okay. And second one is retardation. What is the second term? Sir, deacceleration, no? This is Yeah, retardation. deceleration. Getting it? Now don't check my spellings. My spellings might be wrong for deceleration. Okay. मेरी भावनाओं को समझो तुम लोग. Nice. ठीक है ना? So now understand one thing. ठीक है? अभी मैं तुमको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. We get confused lot of times. बहुत सी बार हम ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है ना? कभी कभी ग्राफ ऐसे होता है, कभी कभी ग्राफ ऐसे होता है, राइट? कभी कभी ग्राफ ऐसे होता है. यस और नो? So we most of the time get confused कि what क्या चल क्या रहा है. यस और नो? सो तुमको एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला देता हूं. तुमको सिर्फ एक सर्कल ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है?
अ सर्कल, ठीक है, और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो इसमें द राइट साइड ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, right side of circle is always increasing and the left side of circle is always decreasing. Okay, now what do I mean by this? What do I mean by this? Now इस सर्कल को 4 पार्ट्स में बनाना है हमको। 4 पार्ट्स में मतलब कैसे? if I am drawing it here, ये फर्स्ट पार्ट समझो, ये सेकंड पार्ट समझो, इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना? so first part is going like this, सेकंड पार्ट whatever shapes we are having here ना, उनको हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने वाले, ठीक है ना? we are always going to draw them in a first quadrant, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्ट बनाएंगे, थर्ड पार्ट इज गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे फोर्थ पार्ट बनाएंगे, फोर्थ पार्ट इज गोइंग लाइक दिस। नो, मैंने उल्टा किया है कहीं पे, तो फोर्थ, अच्छा ये वाला गलत है। सेकंड पार्ट इज गोइंग लाइक दिस। ये समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? आर यू गाइस एबल टू कनेक्ट विद मी? मेरे Yes. साथ कनेक्ट कर पा रहे हो क्या तुम लोग? Yes. मुझे एक बार हाँ सर। सिंपल सा एक्सप्लेन करने दो। आई विल गिव यू द लॉजिक फर्स्ट, देन यू कैन डायरेक्टली और ब्लाइंडली यूज दिस ट्रिक, ठीक है ना? नाउ सी व्हाई आई एम सेइंग दैट राइट हैंड साइड इज इंक्रीजिंग, ठीक है? सी ये वाला पहला। नाउ सी our gradient is always y axis upon x axis or vertical distance upon horizontal distance. Am I right? Recently Yes, sir. we have learned this. Gradient is always vertical distance upon horizontal distance. Yes or no? So if I am taking a constant horizontal distance here, if I am taking constant horizontal distance, you guys will be able to observe कि for same horizontal distance मेरा जो vertical distance traveled है वो बढ़ते जा रहा है। Yes or no? Yes or no? Yes, Yeah. sir. For same horizontal distance my vertical distance is increasing. Yes or no? Now see, when my vertical distance is increasing and horizontal distance is constant, it means my gradient is increasing or not? Correct? But now you guys will say कि sir ये तो नीचे गिर रहा है। Yes or no? This graph is falling down. Correct? Yes, the graph is falling down. But what is the rate of that falling down? That is the increasing rate. The gradient is increasing at a faster rate. Yes or no? Yes sir. Same way, if you observe for here, for the same horizontal distance, my distance on y-axis is increasing. Yes or no? For the same horizontal Yeah. distance, my distance on y-axis is increasing. So here again, my gradient is increasing, and that too at an increasing rate. Here, my gradient is decreasing, that is at an increasing rate. So if you combine these two graphs, यहाँ पे तो decrease हो रहा है gradient, क्या हो रहा है? लेकिन उसका decrease होने का rate कैसा है? Increasing rate है, मतलब वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की बात चल रही है। यहाँ पे वैल्यू जल्दी से नेगेटिव होता जा रहा है, बट नेगेटिव कैसे हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। गेटिंग इट और नॉट गाइस? Yeah. Yeah. Yes sir. फॉर दिस अगेन यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे ग्रेडियंट का वैल्यू नेगेटिव होते जा रहा है बिकॉज वाई एक्सिस नीचे गिर रहा है। सो डिक्रीज ऑफ ग्रेडियंट इज आल्सो हैपनिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ रहा है फॉर द सेम वर्टिकल डिस्टेंस इज कांस्टेंट बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर यहाँ पे ये चीजें डिक्रीज हो रही है। गेटिंग इट और नॉट? इज माय पॉइंट क्लियर? सर तो जैसे अब अभी आपने बोला 2 and 3 के बारे में, थर्ड वाले में ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग पेस। यस, यहाँ पे वापस से ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। गेटिंग इट और नॉट? सो कैसे याद रखेंगे इसको? अभी शॉर्टकट ध्यान में रखो पूरा का पूरा। सी सर्कल
On the right hand side, increasing rate is increasing. This quadrant is decreasing. ये वाला shape is decreasing. ये वाला shape is increasing. इसके opposite में ये वाला shape is increasing. ये वाला shape is decreasing. Diagonally they are decreasing. Left hand side is decreasing rate. Getting it or not? अभी तुमको इसका एप्लीकेशन है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा. Once I take you to the questions, you guys will understand. Getting it or not? Yes, समझ में आ sir. गया यहाँ तक? Yes, sir. Everyone, Yes, I sir. want reply from everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, last point of discussion, and we'll move on to the questions. Okay. ठीक है? Now see. For graphs, understand one thing. I'm taking a simple example: velocity versus time graph. ठीक है? So, हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है. Now, from the same graph, let's take this as an example of. इसको हम स्पीड वर्सेस टाइम लेते हैं, समझो. ठीक है? स्पीड वर्सेस टाइम. Okay. Now see, for the same graph, if I want to calculate the acceleration, क्या कैलकुलेट करना है मुझे? Acceleration. So for the given quantities, acceleration is what? Acceleration is change in velocity upon change in time. Yes or no? So when I'm taking ratio of two quantities, I am calculating acceleration, and ratio of two quantities, that is y upon x, is nothing but the gradient. Getting it or not? So understand one thing, in the given graph, अगर हमको दो quantities का ratio लेना पड़ रहा है, it means we have to calculate the gradient. Getting it? And second point, if I multiply these two quantities, if speed into time is done, the product is distance. Yes or no? So if I want to calculate the distance from this given graph, what I have to do is I have to calculate the area under the given curve. Getting it or not? Let's see one example. ठीक है? Let's see one example. See, is this question visible, guys? Yes. Now see. Acha. Now I'm asking you guys a question. What does A represents? A क्या represent कर रहा है? This is the velocity versus time graph. Okay? This is velocity versus time graph. What is A representing here? The constant acceleration. Yes. Whenever velocity का graph is like this or like this, not a horizontal. Horizontal अगर है, if velocity is It's not constant, acceleration moving. is zero. It's not moving. हाँ, so A is what? A is a constant acceleration. Getting it or not? What is C representing? Constant deceleration. Constant deceleration. And what is B representing? B क्या The represent stop. कर रहा है? The Constant car is speed. stopped or The velocity is constant. It means acceleration is equals to zero. Getting it or not? acceleration is equal to 0. Okay. Now understand my question. Calculate the value of acceleration for segment A and segment C. Calculate the value of acceleration. Come on, give me the answer. So can you repeat the question? Calculate the acceleration for segment A and segment C. For this segment and this segment. अभी बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा. अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन आई सेड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, यू हैव टू फर्स्ट चेक कि दो क्वांटिटीज कौन सी है. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज वेलोसिटी, सेकंड क्वांटिटी इज टाइम. सो इफ आई डू वेलोसिटी अपॉन टाइम, आई विल डेफिनेटली गेट द एक्सेलरेशन. यस और नो? राइट. Now the graph is starting from here, so it is 0, 0, and this point is nothing but 10, 20. So if I calculate the gradient of this, I will get the acceleration. And how do we calculate the gradient? Y2 Gradient minus is- y1. It's 2, right?
upon x2 minus x1. So 20 upon 10, so that is equals to 2. Getting it or not? Yes. Yes, Is my sir. point clear? Now see, Yes. my answer So- will be positive. Why positive? Because velocity is increasing. And here velocity is decreasing constantly. So मेरा answer यहाँ पे negative ही आने वाला है. If your answer is coming positive for this graph, it means you have done the wrong calculation. समझ में आ रहा है कि नहीं? So if I yes, sir. calculate for this side, if I calculate for this, see my this coordinate is 30, 20 and my this coordinate is 70, 0 because it is a x-intercept. So y2 minus y1, so 0 minus 20 upon x2 minus x1, 70 minus 30. So I'll be getting minus 20 upon 40, that is equal to minus half. See, my answer is coming negative. So negative sign represents that your velocity is decreasing at the constant rate because here it is a straight line. अगर ग्राफ ऐसे होता तो velocity is decreasing at non-uniform rate. Getting it or not? How many of you understood Got it, my sir. explanation? Understood. Sir, Yeah, I got it. Sir, understood. Okay. Samaira, Understood. Yes, sir. Arun, Ira, Kihan, Harshil, Understood, sir. Yeah. Kihan, Harshil, Jalil. Understood. Okay, now see. Now if I ask you guys to calculate the distance traveled by the whatever जो भी है ये, what is the distance traveled in this graph? So to calculate the distance, again I will look at the quantities. It is velocity versus time. So speed versus time. Let's assume speed versus time. So if I do speed into time, I will be getting the distance. Yes or no? So whenever formula is representing the multiplication of the two quantities given, I have to find the area under the curve. Getting it or not? Now if you look closely, it is nothing but the trapezium. What is it? Trapezium. And what is the formula for area of trapezium? मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था एक बार बेसिक शेप्स के फॉर्मूला लिखने के लिए. What is the formula for area of trapezium? Sir, half A plus B into height. अच्छा क्या है a plus b बताओ. So it's the Sir, A plus B it's are the two parallel different sides. widths. Parallel sides. Yeah. Yes, everyone write down the formula. Area of trapezium is sum of parallel sides into perpendicular height upon 2. Now what, how to identify parallel sides? देखो ये horizontal है, ये भी horizontal है. So the x axis पे इसका distance is total 70. So 70 plus इसका total distance is 30 minus 10, that is 20 into perpendicular height is 20 upon 2. So 2 ones are 2 tens are 70 plus 20 is 90. 90 into 10 is 900. So what is the distance covered by the person who has traveled this much? It is 900. So we will again look for the units. Units are in meter per second. So distance covered is 900 meter. Getting it or not? Understood sir. or not? Yes, sir. Yes. Okay. अच्छा, now see. यहाँ पे तुमको समझ में आएगा. Look at this question and tell me. This is the distance and this is the time. Okay. What is the graph showing? These are the 4 options you have. Come on. Sir, the Option first one. C. How many are saying option 1? How many of you are saying option 2? How Sir, many of you are saying option option 3? कौन-कौन option 3 बोल रहा है? Sir, option Just C. raise your hands. So it's accelerating. ठीक है. Okay, Shanyu, Ira, Jalil, then okay. ठीक है. See guys, now we understand one thing. मैंने तुमको ये सर्कल सिखाया अभी थोड़ी देर पहले.
So left side means decreasing rate. What is it means? Decreasing. Decreasing, correct? And ये decrease था, ये decrease था, ये increase था, ये increase था, correct? यहाँ पे मेरा slope तो accelerate हो रहा है, correct? It is showing me acceleration. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Correct? Yeah. That's right. But understand one thing. थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है. देखो लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग रेट दिखाता है, क्या दिखाता है? Decreasing rate. और राइट साइड में क्या दिखाता है? Increasing rate. Increasing rate, right? See, this graph is looking like this. Yes or no? Yes, sir. Yeah. It means whatever is happening here, that is decreasing, correct? Yeah. Wait, So- what? No. It's increasing. Yes, increasing but at a decreasing rate. Yes or no? Oh, आंसर तो यही exactly. रहेगा. आंसर तो यही रहेगा. It is accelerating but at a decreasing rate. Getting it or not? Yeah. Yes, sir. This is the complete answer. अभी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिए हैं. That's why we have to say it is accelerating. But what is the rate of acceleration? It is accelerating at a decreasing rate. Getting it? पागल है कुछ नहीं क्या हुआ? तू पागल अरे निकल मजाक कर रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ फोन तो Hello? मिल गया Guys. Okay. Look at this graph. First one. Tell me the answer. So moving at a constant speed in the positive direction. Yes, sir. Correct? It is moving at the constant speed in the positive direction. Right. What is this? So negative acceleration, right? Galat. Positive. पॉजिटिव एक्सेलरेशन Positive. Positive acceleration. Guys. So at the DV, start it's negative. I. इधर के साइड में increasing, इधर के साइड में decreasing. So graph is looking like this. So it is increasing at increasing rate. Yes or no? This one. Getting it or not? अरे हाँ यार कुछ तो बोलो. हाँ सर Yes, Yeah. sir. I'll share this PDF with you. ठीक है ना? चलो ये वाला. मैं कलर बोलूंगा या फिर मैं लाइन इंडिकेट करूंगा. You have to answer. What is this representing? Constant deceleration. Constant. Isn't it constant deceleration? Yeah, Constant deceleration. speed in the other direction. No, it is simply a constant negative velocity. See, it is It's not distance versus deceleration, time right? graph. It is distance versus time graph. Velocity is distance upon time, like displacement upon time. So if it is a straight line, it means it is representing a constant velocity. But here, as it is falling down, it will be constant negative velocity. Getting it or not? Yes, sir. Yes, sir. So it's not deceleration then. It's just- Acceleration is zero here because it is the constant velocity. Velocity is constant, then acceleration is zero, right? Right, sir. Yeah. Tell me, what is this representing? C, Velocity is 0. correct? Because position is not changed. अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं, मेरी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, it means my velocity is zero, right? So therefore, yeah, इसका velocity is zero, correct? What is this representing? Constant positive velocity. Positive velocity. Constant positive velocity. What is this representing? Positive acceleration. Hey bhai, constant positive velocity. Yeah. Same, Yeah, same. it's a straight line, right? Yeah. Yeah. अच्छा, now you guys tell me, इसका velocity ज्यादा होगा 1 का
या इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा 2 का? किसका वेलोसिटी ज्यादा So रहेगा? 1. One. वन वन रीजन? It's It covers covering more more distance in less distance time. in lesser time. It's steeper It has than a slope. so it's more steeper. Yeah, Yes, that the means answer it's should just be like this. The gradient of 1 is more steeper than gradient of 2. That's why gradient 1 has the more velocity. Because in this graph, see, when we are answering graph related questions now, either we have to answer it in the form of gradient wala term or in the form of area wala term. Here the concept is regarding the gradient, so we'll have to answer it in the form of gradient. Getting it? Yes, sir. yeah. अच्छा, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, श्रेय, धीरज, तनिष, ईशान, हम लोग, ठीक है। सो आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि किसका ग्रेडियंट लाइक किसका स्पीड ज्यादा होगा। सो श्रेय का आंसर मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रेय ने कैसा एक्सप्लेन किया आंसर। श्रेय ने बोला कि सर आंसर जो 1 है उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। मैंने पूछा क्यों, व्हाट इज द रीजन? सो यू नो व्हाट ही डिड, ही वाज लाइक सर उसका ये ज्यादा है, ये गेटिंग इट? नहीं समझा तुमको? I got your I joke, got sir. it, sir. Thank you. यार मेरे जोक का कबाड़ Sir, कर I दिया was तुमने। like laughing, but my mic Sir, I was was muted. laughing, but I was on mute. I was just Yeah. telling you. अच्छा, So like I really actually, think you should sir, I really think you should apply for stand-up comedian, sir. अच्छा कौन बोल रहा है ये, कौन है ये? Aryav. आर्य ग्रोवर है क्या? सर मतलब जोतर में आपको जोकर समझ, अच्छा, ऐसे कहना है स्टैंड अप कॉमेडी। come on, calculate the answer for this one. Ten meters per second. Okay. See, everyone write down the formula. Average speed. Everyone write down the formula. ये फॉर्मूला तुम्हारे फॉर्मूला बुकलेट में नहीं देंगे, सो प्लीज मेहरबानी करके लिख लो अपने अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। So they have given us the total distance and they have given us the total time. So directly 100 upon 10. So answer will be 10 meter per second. Now units are very important. ठीक है ना? Units are very important for us. Question 22. Acceleration. Yeah, sir, acceleration. Speed. स्पीड, सर स्पीड। Speed. Speed. कौन बोला सबसे पहले acceleration? कौन बोला? Huh? So I think Acceleration. Aryav. सर आई डिड इट, एक्सेलरेशन आ रहे हो। सर स्पीड है। ये बेड़िया। आगे सर मैं नहीं बोला। distance and time graph है भाई। So Yeah, so that's distance speed, right? Because the versus formula is time. distance upon time. So distance हाँ upon सर, time वही मैं is अर्नब को कह रहा velocity था। and speed, right? So it represents speed. या इट रिप्रेजेंट स्पीड। सर तो आप आर्यव को बोल रहे थे? क्या चुप है। आर्यव को बोल रहा था मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 23rd। So meters per second square. तो ऑप्शन बताओ। Sir, So फर्स्ट, option D. Third option. फोर्थ। Sir, fourth Second. option. Second I think option. fourth. first one. Fourth. Fourth option. एक मिनट, सेकंड ऑप्शन कौन बोल रहा है? सर Sir, फर्स्ट मैं- ऑप्शन, Daniel. फर्स्ट ऑप्शन। First option. फोर्थ ऑप्शन, सर Answer फोर्थ। first आप option. हजार मीटर ऑप्शन लगा पर लो, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर। में। आंसर डी या फोर्थ आंसर। पर का मतलब पावर में नेगेटिव साइन आना चाहिए। गेटिंग इट? सी अभी ये सारे ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो,
अभी इसमें भी कोई ना कोई गलती करने वाला है. डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन 1 2 3 4. ऑप्शन बताना है सर बस. टू Four. Sir, VT. A velocity time graph. No, Correct? two. टू इज द एरिया अंडर Yes. टू फाइंड Because डिस्प्लेसमेंट. velocity versus time, velocity into time will give us the displacement. Yes or no? Yes, sir. That's why I said option. अच्छा चलो. Read the question and solve. Find the answer of this question. Sir, is the answer 100 meter? Okay, Arun. Yeah, I got that. How many of you are Yeah, getting sir, 100 same. meters? Sir, I got 100 meters. Correct. See, again, for 0 to 10 second it is asking. So 0 to 10 is here. So this is the area it is talking about. Yes or no? So it is a triangle. Yes, So half, base is 10, height is 20. So 2 tens are, so 100 meter is the answer. अभी जो भी सिर्फ 100 आंसर लिखेगा उसका 1 मार्क खत्म हो जाएगा. Answers demand units. Okay. So whenever you are writing the answer, please focus on units. अभी लास्ट जो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम और प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, many of you have lost the marks. केमिस्ट्री में H2SO4 का एटॉमिक मास निकालना था for 1 मोल. 96 लिखे आए थे सब लोग, मैक्सिमम पीपल. वहां पे ग्राम्स लिखना भूल गए, राइट? So you guys have lost 2 out of 2, 1 mark there. Yes or no? Am I wrong? अभी किसका गया है कोई नहीं बताएगा. तो हाँ सर मेरा गया था उसमें से. ठीक है. चलो सेकंड क्वेश्चन. अगेन द सेम थिंग, बट फिर भी सॉल्व कर लो. चलो तुम भी क्या याद रखोगे. हर्षिल, समझ में आ रहा है क्या? Sir, a bit. I joined late. हाँ ठीक है, लेकिन हमने पहले ऐसा बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया है. डोंट वरी, तुमको वीडियो मिल जाएगा. Okay, thank you. ईरा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ. पक्का ना? ऐसे एकदम Yeah. खामोशी से तुम हाँ बोल रही हो, शक हो रहा है मुझे. यस. Sir, this one's 150 meters, na? Minus 150. Not minus. Now see, understand the Oh, question. It I is got asking the displacement. What is it asking? Displacement. Displacement है तो नीचे गिर रहा है. So answer has to be negative. Yes or no? Yes, So this sir. is 15 half 15 into, like ये नीचे गिर रहा है इसलिए इसको -15 बेस है तो 15 लूंगा पॉजिटिव, और ये नीचे गिर रहा है तो इसकी मैं हाइट लूंगा 20. करेक्ट? -20. So my answer has to be -150. They are asking us a displacement. Yeah. Okay. -150 is the answer. Come on, question 27. Are these values visible, guys? Yes sir.
Sir, would the answer be negative 1.33 meters per second squared? Yeah, negative 1.33. This coordinate is 15, 20. This is 30, 0. So 0 minus 20 upon 30 minus 15. So negative 20 upon 15. So it will be minus 4 upon 3. So 1.333 minus 1.333. How many of you got the answer? Sir, I got it. Arnav, Arun, Sir, I got it too. Yes, sir. Ira, Samaira, Yeah, I got it. Harshil, Kihan, Janil. Yeah. Yes, sir. I Yes, got sir. it. So got it. Okay. अच्छा इसका ओरली आंसर दे दो चलो. What is the answer? 28 का. So second. Sir, won't it Sir, be zero? second answer. 0 because velocity is Zero. constant in this phase. Okay. Question 34. ईशान गारखेड़कर समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So the answer is 2.5 meters per second. Yes, sir, 2. Yeah, same. Got the same answer. Yeah. अच्छा किसका किसका 2.5 आ गया है? Sir आ गया. Sabka. Sir, 2.5. अच्छा now the second question is find the average speed for the complete motion of the car. Okay. Find the average speed for the 10 seconds. So how much distance is covered? That is what you have to calculate. Now see. Distance कितना cover किया total? Because it doesn't say exactly. Like यहाँ पे 14 or 14 30. consider करो चलो 14. Okay. So 1.4. Yes. ठीक है. But इसका आंसर 1.4 आएगा for 10 seconds. Okay. Yes, sir. Now I'm simply changing the question. Instead of taking distance here, I'm giving you the speed. Okay. Now calculate the average speed for the first 10 seconds. Now let's see how many of you can solve it. Oh, 140. You have to 140. calculate the average speed. The average speed is total distance upon time, right? Correct. Yes. But then the y-axis is speed. Yes. So you've already given the. You've already No, given. but that will not be the average speed. Oh, Sir, like for the 1.58. 1.58. Okay. 33 per. अच्छा ठीक है. Now see guys, why I change the question? Because ये कभी आ सकता है. This might come. ठीक है ना? When I'm saying calculate the average speed, हमेशा पहले फॉर्मूला याद करना. Formula says total distance upon total time, right? But Yes. the graph is speed versus time. So to find the distance, I'll have to do speed into time. Yes or no? But Yeah. Yes, for sir. these two axes, I have to multiply. So if I'm multiplying, it means I have to find the area under the curve or area under the graph. Getting it or not? Yes, sir. Someone please find the area for me. This is a trapezium, right? So now you have to identify the shapes here. It is not completely a trapezium. 2 triangles and a cuboid
Sorry, not cuboid, rectangle. यस एक्चुअली आप यहाँ पे हर किसी का अपना एक अलग नजरिया हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन कैसे, बट फर्स्ट ट्राई योर स्टाइल, अपने हिसाब से ट्राई करो पहले, देन एट द एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. Calculate the total distance. Sir, 92. Area is 92 meters. Area is 92 meters. 92. देखो ये पॉइंट मैंने तुमको बोला है 14 लेने के लिए, ठीक है ना? हाँ sir, 14 there. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरिया, ठीक है? नाउ सी, अभी हर किसी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. कोई इसको ट्रायंगल ले देगा, दिस इज द ट्रायंगल, एंड कोई इसको ट्रेपेजियम लेगा. सी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ऐसा कोई कर सकता है. नाउ सेकंड थिंग, कोई इसको ट्रायंगल ले लेगा, someone will take it as a triangle, और नीचे वाले को ट्रेपेजियम कंसीडर करेगा. गेटिंग इट? दिस इज द सेकंड वे. ओके, नाउ थर्ड वे इज व्हाट, कोई इसको ट्रायंगल ले लेगा, कोई इसको ट्रायंगल ले लेगा और इसको रेक्टेंगल ले लेगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि everyone's point of view can be different, but final answer will always be same. Okay, so what I'm doing is I'm taking this triangle and this as a trapezium. Okay, so for this triangle, let's say for 1 and 2, so 1 के लिए हमारा एरिया रहेगा हाफ, यहाँ पे बेस हमारा हो जाएगा 4 और हमारा हाइट हो जाएगा 10 minus 4, that is 6. So 2 1s are 2 2s are, so इसका आंसर आएगा 12. Second, for this trapezium, the parallel sides का addition will be 10 plus 6, 16 into height is 10 upon 2, so 2 8s are, so this is 80. So total distance is 92. So जिसका भी टोटल डिस्टेंस 92 आ रहा है, ट्रस्ट योरसेल्फ, सही राह पे चल रहे हो तुम, ठीक है? बस इधर उधर भटक मत जाना किसी के पीछे, ठीक है? तो जिसका भी टोटल डिस्टेंस 92 आया है, करेक्ट है. नाउ हमको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड. सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज 10 seconds. So our average speed will be 9.2 meter per second. Getting it or not? How many of you got this answer? Guys, सर मैं बस डिस्टेंस का करा, मैं स्पीड का नहीं करा अभी. how कर many रहा of you got total distance as 92? Everyone. सर. आई गॉट. अर्नव का आ गया, ईशान गारखेड़कर, ओके, अरुण का आ गया, ठीक है, समायरा, ज्योतिर्मय, हर्षिल, जेनिल, शौर्य. Yes sir. भाई यस सर बोल रहा है कि धमकी दे रहा है? अरे सर, जो भी बोलता हूँ बोलते धमकी दे रहा हूँ. भाई तू बात ही ऐसी करता है, तू मैसेज भी वैसे ही करता है मुझे, आज मैं क्लास नहीं करूंगा. ठीक है, आई एम जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली. समायरा, आंसर आया कि नहीं? Yes, sir. ओके गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर. किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. नाउ सी, आई विल डू वन थिंग. नाउ इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज है. लेट्स सी, इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज है. आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू, मैं ग्रुप में पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा. सो जो भी क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं सॉल्व किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चंस हियर, ठीक है? सो जो भी हमने नहीं सॉल्व किए हैं, यू गाइस हैव टू सॉल्व इट एज अ होमवर्क. गेटिंग इट? मतलब एक काम करो, पूरा का पूरा वर्कशीट एज अ होमवर्क सॉल्व करो. इट विल हार्डली टेक 40 minutes या 1 hour, मैक्सिमम 1 hour. गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? Yes sir. Yes sir. यस सर. Yes. और Yes, sir. कल हम पढ़ेंगे, यस टुमारो विल स्टडी मोमेंटम. So we have class on Saturday. आई एम प्लानिंग टू टेक क्लास टुमारो, ठीक है? एक्चुअली What व्हाट आई time? एम प्लानिंग इज कि अगर मैं तुम्हारा वीक में 5 to 6 days क्लास लेना चालू कर दूं, एवरी डे 1 hour और एटलीस्ट 5 days a week, बिकॉज
नेक्स्ट मंथ में हमारे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस, सो इट विल बी अ बेटर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आई थिंक। ओके, Yeah. So what time are you thinking of taking class tomorrow? सेम टाइम। Oh, night. Okay. Okay, Yes. sir, I'll be there. Yeah, I'll be there as well. यस, सो गाइस प्लीज बी रेडी कि कल भी क्लास हो सकता है। 99% यस है, ठीक है, अगर 1% कहीं आगे पीछे हो जाए तो आई लेट यू नो, ठीक है ना। सो टुमारो विल बी स्टडीइंग मोमेंटम, impulse, force वाला फॉर्मूला, and we will discuss energy. Getting it? I'll explain you the concepts first and then we'll solve few questions based on these concepts. Getting it? Okay, sir. Yes or no? Yes, sir. So I hope everyone has understood whatever we have done today. ठीक है? Yeah. I hope everyone has understood कि हमने आज क्या Yes. पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। Yes, sir. घर पे जाने के बाद आज पहले सोने से रिवाइज करना। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस एक बार वापस से सॉल्व करना, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। मैकेनिक्स विल बी आवर स्ट्रेंथ देन। गेटिंग इट? मैकेनिक्स पे बहुत इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, sir. Thank Yeah. you. ठीक है, चलेगा। ओके Yes, sir. गाइस, Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Bye. Bye, Good sir. night. Good Sir, night. have a good Bye, night. sir. बाय 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 बाय। संतोष Yes, sir. किधर भाग गया था भाई क्लास छोड़ के? अरे नहीं सर,